Wonderful. We are live. Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Suhail Zindani and I welcome you all to this conversation, what we call FYI. Now, we know FYI from a context of for your improvement, and of course, it will create more improvement on your part, but this is for your insights as well. And what we have decided in this conversation, normally, हमने जितनी conversations plan की, we always plan. That's the need of the hour, you know. We need to plan कि इसको कितने लोग देखेंगे, इसकी कितनी viewership होगी, इसका कितना mass projection होगा, because we all are looking at that. Let's be honest about it. But I think in this conversation that we have planned today, the scenario is very different. This is our contribution towards industries at large. So in the For Your Insights segment, what we are doing is we are inviting business leaders, we are inviting thought leaders to come share the perspective of their respective industry, and then this gets documented, this gets digitally documented, but we can come in as observers, as listeners, and we can learn from that. So we have various industries planned into this segment, but today I wanted to start with an industry जिसके साथ मैंने काम तो बहुत थोड़ा बहुत किया एज अ ट्रेनर. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन इस इंडस्ट्री का, अभी मैं कंपनी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे होना चाहिए, unfortunately for various reasons, I think we as society have not benefited from that. The kind of potential this industry has to offer is so immense, but somehow this always appeared to be as a luxury product, a product that only few can afford, and जिसको इस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है उसको इस प्रोडक्ट की सबसे कम अवेयरनेस रहती है. I'm talking about the insurance industry. Now, insurance industry is of course not new to Pakistan. We all grew up listening to wonderful jingles about about insurance. But to be very honest, it has been last few years, a decade or so, where insurance have gained some momentum. And if I have to be honest and fair in saying that this momentum is credited to our guest today, a significant portion is credited to our guest today. Today we have a leader who I have a personal respect, aspiration, regard for. Why? Because he is so amazing, he is so genius? No, he might be, I don't know, but the contribution that this man has had for the industry is something that I think is immense. Very few leaders that I know, particularly in this country, who have single-handedly influenced a complete industry to that level. And today I'm honored to have Mr. Javed Ahmed with us, who is the Managing Director and the CEO of Jubilee Life Insurance. Welcome, sir, to our conversation. Assalamu alaikum, Sohail. Thank you very much, and thank you for an introduction. ज़्यादा ही तारीफ कर दी आपने. नहीं, आप यकीन करें मैंने कम की है. But thank you, sir, for coming. And I think ये जैसा मैंने अपने introduction में कहा कि ये series हमारे लिए बहुत significance रखती है, just for one reason, and that is कि the idea behind this is to get insights, to get perspective, to get thoughts that we can bring to our organizations, in that particular industry, but industries at large. Because I'm sure if industry of insurance has a certain perspective, pharmaceuticals can learn from it, and the banking can learn from it. So thank you, sir, for giving your time, and I hope this conversation is benefiting for all our listeners. Thank you very much. Thank you for inviting Sohail. So my pleasure. So let's begin. I think there are so many questions that I have, and in the process, as we get questions, I'll pass that on to you. How has COVID-19 affected you, sir? That's a question I would like to begin with. How it has affected the industry per se? Well, you see, the current distribution channels that life insurance companies operate with are basically physical channels. And individual life sales जितनी होती है, जो policies आपकी इसको बेची जाती हैं पाकिस्तान में, those are one-to-one sales. So you have to go physically meet a prospect, present the plan, convince the person, and then document everything, submit it to the company. So your physical one-on-one selling है ना, personal. This has been very severely impacted because lockdown की वजह से जो है, it was not possible कि आप लोगों से जाकर मिलें या उनको convince कर सकें. So there has been a significant impact due to it.
अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे मीडियम्स हैं, जैसे आप कहें कि डिजिटल चैनल्स हैं या कॉल सेंटर के थ्रू सेल्स हैं, वो पाकिस्तान में ना तो इतना ज्यादा प्रिवेल करती हैं, ना ही कोई हमारे यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा है कि जो एनकरेज करता हो इन सारी चीजों को। तो अभी तक जो प्राइमरी फोकस रहा है वो 1-to-1 फिजिकल सेल्स पे रहा है, has been very badly impacted. राइट एंड आई थिंक ये जो आपने अभी बात कही कि डिजिटल और ये इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, कैन यू, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लिसनर्स होंगे जो इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाएंगे, तो इन टर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग, इन टर्म्स ऑफ हम कौन सी चीजें डिजिटली सेल कर सकते हैं, कौन सी चीजें जिसके लिए फिजिकल साइंस और ये जरूरी है, कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट सो दैट वी कैन बिल्ड ऑन दैट? जी, देखिए प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचुरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। तो एक तो प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है व्हिच प्रोवाइड्स फॉर द केयर ऑफ द फैमिली इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस है व्हिच यू कैन अवेल इफ यू आर सिक। बट देन एक जो बहुत बड़ा जो मेजर फोकस है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, दैट इज ऑन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स व्हिच हेल्प द फैमिली in meeting their financial expected financial obligations. For example, education of child, कि आपने बच्चे को अगर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजना है, उसके लिए यू प्लान, यू सेव सम मनी इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और दैट मनी इज देन मेड अवेलेबल टू यू व्हेन योर किड्स गो टू कॉलेज। या आपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए कुछ बिजनेस के लिए कुछ पैसे सेटअप करने हैं, अपनी रिटायरमेंट के लिए आपने सेविंग्स करनी है, तो इन सारी चीजों के लिए एंड देयर आर टैक्स एडवांटेजेस अवेलेबल टू प्रमोट दीज थिंग्स अंडर इंश्योरेंस। अनफॉर्चुनेटली जितने सेविंग्स ओरिएंटेड प्लान हैं जो कि इस वक्त करंट, अगर आप मुझसे मार्केट का पूछेंगे इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट का, तकरीबन आई कैन सेफली से दैट इन आवर रिटेल बिजनेस, इंडिविजुअल लाइफ बिजनेस, 99%, 98% प्रीमियम is generated through these long term savings plans, savings and protection plans. ये जो plans है ना, for those there are regulatory requirements which can only be met when you do the physical documentation. For example, you have to make an illustration for presentation to the customer, you have to fill a proposal form, you have to fill various need analysis forms. ये सब कुछ जो है, ये this has to be physical. Once ये डॉक्यूमेंटेशन हो गई, उसके बाद तो फिर इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी है वो उसको डिजिटली प्रोसेस करे, पेपरलेस प्रोसेस करे, वो किसी तरह से भी कर सकते हैं। बट फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव एंड द एजेंट्स पर्सपेक्टिव, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज इन्वॉल्वड। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये चेंज नहीं होगा, आप सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल मीडियम्स और थ्रू एनी अदर मीडियम विल रिमेन अ चैलेंज। इस वक्त करंटली जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू बेच सकते हैं, और वो अवेलेबल भी है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी मेजर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कि एवरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज अ डिजिटल पोर्टल जहां पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स, पीपल कैन गो एंड बाय दोस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। राइट, yeah, I know for sure there are certain products that I have been in touch with. मुझे जावेद साहब इसको थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम स्ट्रेच करते हैं। इससे पहले भी आपसे मेरी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन इस हवाले से रही है। आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड यू नो द पर्सन सेड, इस वक्त अगर इंश्योरेंस होता तो कितना फायदा हो जाता। और ये नेक ख्याल हमें हमेशा बाद में ही आता है। But this has been, you know, our conversations in past as well, that insurance is still perceived as a luxury product, and I've shared with you my experiences of talking to people about it. Do you really see that after this pandemic, and with all its you know, the digital connectivity we have, do you really think that insurance industry need to seriously gear up for a different level of marketing altogether in terms of engage more people to this? Do you see it as a marketing flaw, or do you see that no, it's deeply rooted into our nation and we'll just not adapt to it? सुनील, दोनों इश्यूज हैं। देखिए, एक तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि देखें, इसमें जो इंश्योरेंस की हमारे यहाँ पेनिट्रेशन लो है ना, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी है अपना, क्योंकि हमने अवेयरनेस के लिए काम नहीं किया, हमने लोगों तक पहुंचने के लिए काम नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम नहीं किया उस तरह से। एंड दैट्स व्हाई अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हमने ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर किया मार्केट में, जब नोबडी वाज इनफैक्ट थिंकिंग कि ये पॉसिबल भी है, लेकिन वो सक्सेसफुल रहे हैं। बट आई थिंक एज अ
ओवरऑल जनरल अगर आप बात करेंगे तो इंश्योरेंस की अवेयरनेस पे काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, जो कि सारे सारे सब सब कंपनीज को मिलकर भी करना चाहिए, इंडिविजुअल भी करना चाहिए। अभी तक की पोजीशन ये है कि जुबली लाइफ हैज बीन स्पेंडिंग ऑन इट, क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्रिएटिंग ब्रांड नेम. Another private sector company has also been spending some amount, but I think lot more is required to be done. But on the other hand, ऑनेस्टली आपकी वाली बात की हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि जो हमारे जो लोग हैं वो भी जो है इसको जरा सीरियसली ले नहीं पाए या देख नहीं पाए हैं। You rightly pointed out that many people think that it is a luxury. To be honest, it's not a luxury. Luxury उस वक्त बनता है जब आप बहुत अच्छे खासे पैसों के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। But then you see, if you are thinking about sending your daughter to study abroad, तो फिर आप एक डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं ना, आपके पास इतने पैसे हैं। बट फॉर द मिडिल क्लास, आई थिंक इंडस्ट्री ऑलरेडी ऑफर्स प्रोडक्ट्स which are meant for middle class. अब मुझे बताइए, हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी, एवरीबडी शुड हैव इट। इस वक्त आपने जैसे कहा कि इस वक्त हर कोई यही कहेगा कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता तो बड़ा फायदा हो जाता। बट अगेन बात हुई है कि हेल्थ इंश्योरेंस हैज बीन अवेलेबल, कंपनीज ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, लेकिन somehow or the other लोगों ने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं या उसके बारे में सोचा नहीं है। तो पीपल नीड टू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट इट कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। और ये दीज आर द सिचुएशंस व्हेन पीपल रियलाइज। अनफॉर्चुनेटली वो जिसे कहते हैं ना, मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट होती है, तो थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हैं फिर लोग। और जब तक कोई इंसिडेंट नहीं होता किसी के साथ फैमिली में या अपने साथ, उस वक्त तक वी थिंक दैट दिस इज एन एक्सपेंस which is being incurred unnecessarily, and therefore people discontinue even if they have bought insurance. So we need to understand कि ये जो चीजें हैं ये आपको लॉन्ग टर्म में काम आती हैं, although आप पे कर रहे हैं on a regular basis, but it is always beneficial. ये कब की बीमारी जो है या पेंडेमिक जो है ये पूछ कर तो नहीं आता किसी से। बिल्कुल, आई थिंक ये सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरी ऑफिस की मैं आपको बात बताता हूं। एंड वी जस्ट गॉट आवर इंश्योरेंस डन थ्रू जुबली ऑफिस के कोलीग्स के लिए। सो व्हेन वी वर गेटिंग इट डन, सो मेरी ऑफिस के लोग बड़े कमिटेड हैं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मेरी ऑफिस के लोगों ने सर सारे नंबर्स देखे और पैसे देखे और फिर उन्होंने कहा कि बॉस हम बड़े यंग लोग हैं, हमें कोई इस तरह की बीमारी नहीं होने वाली, आप ऐसा करें ये पैसे जो है ना आप इंश्योरेंस में ना दें, आप हमारी सैलरी में ऐड कर दें, बाकी जो बीमारी हुई हम खुद देख लेंगे। Now that's, I'm talking about the most educated brains. Of course they did it out of love, but I think that's the kind of a shift, because वो एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग वो कौम में हम लोग पहले चौकीदार रखते हैं, फिर ये दुआ करते हैं कि कोई एक आध डकैती तो हो कि चौकीदार का ROI निकले, you know, कुछ तो चौकीदार या तो वो, आई थिंक दिस इज डेंजरस, दिस इज वेरी राइटली सेड। और फिर हमारी मेमोरी के हम भूल जाते हैं, ये थोड़े दिन निकल जाएंगे। और मैं इसको थोड़ा और आपके साथ स्ट्रेच करना चाहूंगा। आपने कहा मार्केटिंग के हवाले से there's certainly Jubilee Life is spending, and I know other private life insurance companies are doing work around this. मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच करता हूं। when you say spending on marketing, do you see a need for a real level of design thinking or innovation in making conversations about, or the story of, or the idea of insurance in day-to-day conversations? So मैं एक एग्जांपल सिर्फ, और उसके बाद फिर I'll take your input के मिसाल के तौर पे, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्सर्ट की हेडलाइन स्पॉन्सर है, so of course that creates brand recognition. But do you agree with this thing कि इस वक्त जो एक massive level of investment required है वो इस dialogue को change करने के ऊपर है कि क्यों insurance industry is not a luxury industry but a necessity industry? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है या क्या थॉट है? I hope I've made my point clear. नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक्चुअली जो जब ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए जितना भी काम होता है ना, उसमें इट इज ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च।
that research is carried out by the agencies, independent agencies हैं जो कि काम करके रहती हैं. And in that research, we actually explore these possibilities and we ask these questions कि लोग expect क्या करते हैं, उसको address भी करने की कोशिश करते हैं. लेकिन naturally there is definitely a room for bringing some changes, especially if I look at the future of this country, जो हमारी young generation है, जो नई population है, जो कि which will be more digital savvy and who's using internet, who's using smartphones, तो वो लोग वो उस generation के लिए मैं समझता हूँ कि message has to be altered, message has to be conveyed differently, has to be presented to them in a different manner. तो इसकी डेफिनेटली जरूरत है, उस पर काम करना अभी बाकी है हर कंपनी के एंड पे. आई एम श्योर के हुआ ये कि देखें, इन एवरी बैड थिंग देयर इज सम गुड थिंग आल्सो. तो ये पेंडेमिक चाहे यस इट हैज बीन डिजास्टर्स फॉर कंट्रीज ओवरऑल, everywhere in the world it has been disastrous for economies, disaster for industries. लेकिन at the same time this is now giving rise to these new thinkings जिस पे कंपनीज इस पे बात कर रही हैं कि भाई अब आगे गोइंग फॉरवर्ड हमें मजीद कौन से चैनल डेवलप करने हैं, हमें मजीद एक्सेसिबल कैसे होना है फॉर आवर कस्टमर्स एंड फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स. वर्क फ्रॉम होम स्ट्रैटेजीज, आई एम श्योर हर जगह आप यही सुन रहे होंगे कि कैसे करना है और क्या करना है. तो ये चेंज जो है ना, दिस इज इनएविटेबल एंड कंपनीज शुड गेट रेडी एंड शुड एम्ब्रेस इट. And when you say companies should get ready and embrace it, it's also about, which I'm sure you'll agree, it's about leaders should embrace it because they're the company. So how agile do you find leadership at the insurance industry at the top tier, who are agile to these conversations? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये असेसमेंट देना किसी और कंपनी के बारे में या किसी और कंपनी की लीडरशिप के बारे में, बिकॉज देखिए डे टू डे इंटरेक्शन होना एक अलग चीज है, लोगों को जानना एक अलग चीज है, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी किस कंपनी की क्या है या क्या सोच रहे हैं जहन में, ये बड़ा मुश्किल है. फ्रॉम जुबली लाइफ्स पर्सपेक्टिव आई कैन टेल यू दैट I can give you an example rather कि we are the largest health insurer in the country, right? So before the start of lockdown we sat down and we said कि अगर कंपनी बंद हो गई या सब कुछ बिजनेस बंद हो गया तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे. And we decided that there is one operation which cannot be shut down as a not just as a company. मैं समझता हूँ किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को जो इस बिजनेस में है वो बंद नहीं कर सकते. एंड दैट इज आवर अप्रूवल सेंटर के हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम आते हैं अस्पताल में, जब आप कोई क्लेमेंट जाता है तो हॉस्पिटल कॉल्स अस, टेक्स एन अप्रूवल या किसी और मींस के थ्रू अप्रूवल लेता है, ईमेल के थ्रू अप्रूवल लेता है. दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट ऑल टाइम्स. So we started work from home for our approval center. That was the first function to go on work from home. And throughout this lockdown period, I can tell you that we have worked 24 hours. Our call center has not gone down even for a single minute. And I think this is the commitment that we have towards our customers. कि अगर किसी शख्स ने इंश्योरेंस ली है तो इस वक्त काम नहीं आएगी तो फिर कब काम आएगी. So I think these are the again challenges जो कि अगर आप पहले से तैयार होंगे, पहले से सोच लेंगे तो उस पे आप काम भी कर लेंगे और उसका रिजल्ट भी देख लेंगे. We were fortunate that we had invested in technology and that enabled us to start working from home. हमारा एक significant workforce जो है is currently working from home. We are trying कि हम उसको मज़ीद बढ़ाएं, बजाय इसके कि अच्छा इस दौरान में naturally while companies were talking about saving cost or thinking about cutting cost, we were buying laptops. We were buying internet devices for people. क्योंकि I can't ask कि एक जो आपके पास low paid employee है उसको आप कहें कि तुम घर पे बैठ के काम कर लो और वहाँ पर अपना खरीद लो कंप्यूटर या कुछ और कर लो. You have to do it for them. हमारे यहाँ अभी ये सिचुएशन नहीं है कि हर घर में आपको एक डेस्कटॉप नजर आ जाएगा या लैपटॉप नजर आ जाएगा. आपके 90% लोगों के पास अभी तक ये डिवाइसेस घर पे मौजूद नहीं होते हैं. So इसके लिए देखें थिंकिंग रिक्वायर्ड है, कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, नॉट जस्ट फ्रॉम द लीडरशिप बट फ्रॉम द बोर्ड लेवल एज वेल. इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके जिसपे आपको सबको काम करना पड़ेगा. अब मेरा इस पे सिर्फ पॉइंट ये है कि बजाय इसके कि आपको
को फोर्स कर दिया जाए to move in this direction. You take the initiative and do it yourself. This makes so much sense. And I really appreciate ये जो आपने भी call center के हवाले से बात की, because एक इससे पहले I was doing a conversation with a leader and we discovered कि हमारे यहाँ आप इस वक्त देखें तो जितना भी food industry है जो call center based है, they've completely collapsed because they should have tripled the force. And what happened was that because they were not making money out of direct sales or any money out of direct sales, उन्होंने अपने call center का staff भी कम कर दिया, which resulted into further disaster. And so I think this is important. What changes you see happening? अगले चंद दिनों में, महीनों में, हफ्तों में, I don't know. But what changes do you see happening in your industry? At least 3 things. Number one, as I mentioned, that digital channels are going to explode. Companies have already worked on those channels and will continue to work on those channels, but there is a great need to develop products which are suited to the population who uses those digital channels. Current जो products हैं वो standard run of the mill products हैं जो otherwise भी insurance companies sell करती हैं. We need to change our product suite. We need to come up with some products which actually attract the target market. That's one. Number two, I think digitization of the existing sales force as well as the workforce जो आपके ऑफिस में काम करती है. तो आपके workflows, everything, they needs to be reviewed. उसको आपको मैं ये समझता हूँ कि digitize करने की जरूरत है. और जो last, again, building upon the second thing, work from home. I can clearly see that not just for insurance industry, for every industry, this is now coming up as a very viable option. अब से पहले कंपनीज सोच रही थी या कभी सोचा था, बीसीपी हर एक ने, जिसे हम कहते हैं ना, हम सब ने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाए हुए थे कि अगर कोई मसला हो गया तो यहाँ से जाकर न्यू बैठ के काम कर लेंगे, लिमिटेड स्केल डाउन कर देंगे, ये सब तैयार किया हुआ था कंपनीज ने. Everybody has been forced to test it during these times. और आई थिंक इंसिडेंटली चूंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आपकी टेस्टिंग जो है, यू कांट अफोर्ड टू शट डाउन योर बिजनेस फॉर फुल वीक. आप 2 दिन के लिए करते हैं, वीकेंड पे टेस्टिंग करते हैं. बिकॉज ऑफ कोविड everybody was forced to shut down business for longer periods. Everybody was forced to work, find out alternative ways of doing business. So as a result, अब नजर ये आ रहा है, I can clearly see that work from home is a very viable strategy or opportunity, whatever you want to call it, and companies should be exploring it. I can tell you कि अभी तक जो हमारा feedback है from our employees who have been working from home, it's been very positive. People would like to work from home. We see that productivity levels एक बड़ा concern है सबका, यदि productivity levels drop हो जाएंगे या उस तरह के नहीं रहेंगे. Honestly, I've been working from home. And our senior management, everything सब घर से काम कर रहे हैं. We can tell you कि productivity level नीचे नहीं जाएगा. It can go up actually. That's आपको मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है ये आपसे सुनकर. Because I've been propagating this. मैं आपने ये जो अभी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का कहा, जावेद साहब, हम लोग एक इनोवेशन के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे क्लाइंट के साथ, एंड दिस इज 3 years back, 2.5-3 years back. एंड तो वहां हम लोग एक इनोवेशन के प्रोग्राम में एक एक्सरसाइज करवाते हैं. पो इज provocative statements, where you make some provocative statements and then you brainstorm around it. So the post statement was that, what if everyone has to work from home? This is 2.5-3 years back. And तो उस प्रोग्राम के अंदर ये जो यंग और लॉर्ड था वो बड़े खुश ना, वो they came up with this and that and you know just so of course उस प्रोग्राम में चंद बुजुर्ग भी बैठे हुए थे and they got so bloody upset. They said ये अच्छा, एक तो वैसे ही बड़े अपसेट थे मुझे देखकर, क्योंकि मेरी उम्र उनकी उम्र से आधी थी और वो तैयार ही नहीं थे कि उम्र के इस फर्क के साथ भी सीखा जा सकता है.
लेकिन जब ये एक्सरसाइज हुई उसके बाद तो वो और अपसेट हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें बिजनेस का नेचर पता है, ये हमारे बिजनेस में मुमकिन ही नहीं है, ये तुम मिलेनियल्स बातें करते रहोगे कि मुमकिन ही नहीं है। ये कंपनी सर 26 मार्च से वर्क फ्रॉम होम कर रही है और अब उस कंपनी ने अभी अभी रिपोर्ट किया है कि आवर प्रोडक्टिविटी हैज एक्चुअली गॉन अप बाय 20% व्हाइल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज कम डाउन। सो आई थिंक ये वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वरना हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स चेक नहीं करने थे। ये जैसे मैं अक्सर एक दफा पीआईए में बैठा था तो वो उसका जो जैकेट होता है वो सीट से निकला हुआ था, तो मैंने जरा निकाल के चेक किया तो वो खराब था। तो मैंने साथ वाले से कहा, मैं कहा यार ये तो खराब है। तो उसने कहा आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इसकी जरूरत की जब तक बारी आएगी तब तक हम मर चुके होंगे। तो इस लेवल की बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है हमारे यहाँ। सो आई थिंक दैट्स वेरी encouraging that somebody at your level is acknowledging this thing. सोहेल, आई थिंक इट इज वंडरफुल। अगर आप 2-2.5 साल पहले ये बात कर रहे थे तो देखें, ये दिस ऑप्शन हैज ऑलवेज बीन देयर। द ओनली इशू इज के हम लोग खुद जो है ना इसको सीरियसली ले नहीं रहे थे कभी, और इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, और हमेशा अंडरस्टैंडिंग ये थी या फीलिंग ये थी कि प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी, प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं हो सकती। आई थिंक विद द न्यू जनरेशन, मैं तो पुरानी जनरेशन, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे जैसी जनरेशन जो है ना वो तैयार है इस पे काम करने के लिए, तो यंग जनरेशन जो है ना वो तो आई एम श्योर दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गो फॉर दीज सॉल्यूशंस। All that companies now are required to do is to think about a strategy that is suitable for them. देखें, ये यहाँ पर वन साइज फिट ऑल नहीं चलेगा, कहीं पे भी नहीं चलता, बट इसके लिए भी एवरी कंपनी इज डिफरेंट, एवरी बिजनेस इज डिफरेंट। यू राइटली सेड कि उनका हो सकता है ये व्यू उस वक्त हो कि ये बिजनेस ऐसा है, ये, बट आई कैन टेल यू कि इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल है। मैं आई कैन टेल यू, मैंने बताया ना आपको कि हमारा पूरा अप्रूवल सेंटर 100% घर से काम करता रहा है, और इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड सर्विस 24/7 बाय मेकिंग पीपल सिटिंग एट होम, तो जनरली ये सोचा भी नहीं जा सकता कि आप 24 आवर सर्विस देंगे विदाउट मॉनिटरिंग पीपल, कि कोई सर पे खड़ा होगा ताकि फोन कॉल्स अटेंड हो रही है, सब कुछ हो रहा है। यस, द वर्कलोड हैज गॉन डाउन, बट गिवन दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम श्योर कि उसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे फर्दर, यू कैन इंप्रूव इट even further. Absolutely, and I think ये कॉल सेंटर को वर्क फ्रॉम होम करना is absolutely no joke. I think that has been a feat. और अगेन इसकी वो आपने अभी सर जो बात कही कि ये चीजें थी हमारे पास, मतलब अभी भी पाकिस्तान में इस लेवल के लोग मौजूद हैं जिनको लग रहा है कि जो बेसिकली ये साबित कर रहे हैं। एक इंतहाई आला दर्जे के दानिश्वर से मेरी बात हो रही थी, तो वो किस तरह मुझे उन्होंने साबित किया कि ये चाइना की कॉन्स्पिरेसी है कोरोना वायरस। उन्होंने कहा ये देखो तुम कि वो वायरस लाए और साथ ही उन्होंने जूम बना लिया। तो फिर मुझे उससे काफी टाइम लगा ये समझाने में कि जूम उससे बहुत पहले से था। सो ये आई थिंक दैट्स एंड आई थिंक इसमें सर आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि नाउ दैट आई नो जुबली लाइफ हैज एन एग्जिस्टेंस इन ईस्ट अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स, do you also see this work from home opening up possibilities and opportunities for global hiring? Why not? Hiring irrespective of location is for sure a possibility now. I mean, think about it कि कंपनीज जो हैं वो इतने बड़े बड़े ऑफिसेस बनाती हैं लोगों के लिए, ऑफिस का माहौल बेहतर करने के लिए ये एक्टिविटी होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, एंड देन I remember clearly that we were growing very rapidly during early years, and every 2 years we used to run short of space, sitting space. Yes. आज अगर ऐसा हो तो I know कि मुझे नई जगह तो we can hire people, we can make them work from home और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल definitely is a possibility. Global hiring, working from anywhere. I've been attending meetings for Jubilee Kyrgyzstan and Jubilee Kenya, sitting on the same chair at the same location, and I'm sure that you may have also noted. बाकी काफी लोगों ने भी मुझसे कहा कि meetings somehow
through Zoom, through Teams, through Skype, through whatever channel software you are using, have become more productive. Yes. To the point discussion होती है, concise होती है, and fruitful discussion होती है. Office room meetings have, honestly speaking, have never been as productive as virtual meetings. राइट एंड आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ना, आप किसी को भी म्यूट कर सकते हैं उसमें कोई चाय की डिस्टरबेंस नहीं है वो अपनी जगह है. उसके अलावा ये भी है कि अगर एक से ज्यादा लोग बात कर रहे हो ना, तो किसी की भी बात समझ नहीं आती है, तो थोड़ी देर बाद खामोश हो जाते हैं. तो वो है. तो अब आप मुझे बताएं कि इफ यू आर स्पेंडिंग, मतलब प्रोडक्टिविटी की जैसे हम बात कर रहे थे कि इफ यू आर स्पेंडिंग 2 hours इन अ मीटिंग, नाउ दैट वर्क कैन बी डन इन 1 hour. इज दैट नॉट अ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज? यस, देयर यू गो, एब्सोल्युटली. इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम में आपको काम आएंगी और आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करेंगी या आपके टाइम को कम बचाएंगी, तो प्रोडक्टिविटी एज अ रिजल्ट बेहतर हो जाएगी. अब मैं इस कॉन्वर्सेशन को, बिकॉज वील मूव इनटू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस, एंड मैं आपसे एक बहुत पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ. सो I have my father who comes from next generation, and he without naming, you know, कि उन्होंने इंश्योरेंस के लिए सिर्फ एक कंपनी का नाम सुना था और उससे मुतल्लिक मिथ्स, उससे मुतल्लिक कि जब मरने पड़े होगे तो कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा. आई बीन लिसनिंग टू दिस. आपसे ये बात ढकी छुपी नहीं है कि मैं इंश्योरेंस को लेके कितना पैशनेट हूं एंड हाउ मच आई टॉक अबाउट दिस थिंग. मुझे बताएं कि हम मूविंग फॉरवर्ड, एंड आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू व्हाट वी कैन डू टू चेंज this perception of insurance, that hey, listen, these are not people sitting there to cheat you. These are people who are there to support you when you need the most, to support you when your family members also are not interested in supporting you anymore. How this dialogue needs to change? हमें क्या करना चाहिए? What's your, imagine you get the best Manhattan agency to manage that for you, and you know everything happens. What do you think, sir, should change? हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों की सोच बदलनी है, हमें बूढ़ों की बदलनी है, कहां से शुरू करें? बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी. जो ये जो आपने बात की ना, ये तो इमेज है इंडस्ट्री का. दिस इमेज हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्री. तो इफ दिस इज टू बी चेंज, देन द इंडस्ट्री हैज टू वर्क ऑन इट. बच्चों की सोच चेंज करने से या बड़ों की सोच चेंज करने से कोई फायदा नहीं है. उनकी सोच जो डेवलप हुई है या उनका जो इंप्रेशन डेवलप हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. हर कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है. इंसिडेंटली इंश्योरेंस कंपनीज, बिकॉज दे वर्क विद पीपल. हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि हम मोबाइल फोन बनाकर बेच रहे हैं, गाड़ी बनाकर बेच रहे हैं. आप कोई भी चीज खरीदते हैं बाजार से, तो उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलता है. तो इसी तरह से जब आप व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, यू आर डीलिंग विद इमोशंस, तो देयर आर लॉट मोर प्रॉब्लम्स, लॉट मोर चैलेंजेस. तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज वो नीड्स टू वर्क ऑन इट. उसके लिए 2-3 एरियाज है जिस पे काम करने की जरूरत है. एक पहला जो है ना, वो है ट्रेनिंग ऑफ देयर पीपल, देयर टीम्स. स्पेशली जो आपका फ्रंट एंड स्टाफ है, चाहे वो सेल्स स्टाफ है, कस्टमर सर्विस स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि ये इमेज बेहतर हो कि पीपल हु आर डीलिंग विद दोस पीपल, उनको समझना चाहिए कि क्या चैलेंज है अगले कस्टमर्स का. इंश्योरेंस इंसिडेंटली यू नो वेरी वेल इज एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर. मेजॉरिटी हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, वो एट द टाइम ऑफ बाइंग दे अपेरेंटली डू नॉट रियली गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में दैट those details lead to misconceptions and disputes. उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है. आई थिंक उनको चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है इंडस्ट्री की भी है, बट उस पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है. नंबर 2, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो इंप्रेशन है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है. उसमें एक कार इंश्योरेंस भी आ जाती है, घर की इंश्योरेंस भी आ जाती है, इंडस्ट्रीज जो है उनकी इंश्योरेंस भी आती है. तो लाइफ एंड नॉन लाइफ बोथ. वहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ कि क्लाइंट्स को फेस करना पड़ता है, लोगों का इंप्रेशन जो बनता है, वो होता है क्लेम्स के वक्त. कि इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाती हैं या ऐसा बनाती हैं कि जिसकी वजह से कस्टमर आर फोर्स्ड टू थिंक
that insurance companies are trying to not pay the claim. अब उसकी वजह अगेन ये है कि insurance companies are trying to protect themselves against fraudulent claims, which unfortunately are part of our society. फ्रॉड देखिए सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट नहीं करता. मैं आई कैन टेल यू कि किस किस तरह के क्लेम हमारे पास आते हैं. आई मीन पर्सन इज अलाइव एंड वी हैव रिसीव्ड डेथ क्लेम. द पर्सन वी रिसीव्ड अ क्लेम where the person bought the policy when the person was dead already. मरे हुए इंसान पे पॉलिसी लेके 2 महीने बाद क्लेम लॉन्च कर दिया. तो ये हमारा जनरल इशू है बिल्कुल, और इंश्योरेंस कंपनीज आर फोर्स्ड टू टेक दोस मेजर्स. But anyway, I think with the now that technology is moving in every front, for example, आपके पास अब मुल्क में एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मौजूद है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं. आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है जिसके थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स विदाउट वायलेटिंग द प्राइवेसी ऑफ एनी इंडिविजुअल. आप जो डेटा गैदर करें एंड इफ यू हैव एप्रोप्रिएट परमिशंस, उसके थ्रू यू कैन मेक द क्लेम प्रोसेस सिंपलर एंड फास्टर. So these are the areas where insurance industry will have to work. I can say very proudly कि in Jubilee Life we make sure कि claim कोई भी आए हमारे पास तो हमें उसको process करना है as soon as possible. Generally companies claim form भेजकर customer को और समझती हैं कि उनकी responsibility पूरी हो गई. Corporate client की हद तक तो बिल्कुल सही है, because corporate clients जो है वो claim form भरवा भी लेते हैं, documentation भी कर लेते हैं. लेकिन एक इंडिविजुअल जो है ना, अब आप खुद मुझे बताइए कि इफ समबडी बॉट अ पॉलिसी और उसकी डेथ हो गई, घर में कौन है? विडो है. विडो वो तो इज्जत से पहले घर से बाहर नहीं निकलेगी. तो हाउ आर दे गोइंग टू फिल द फॉर्म्स? तो हमने एक टीम बनाई हुई है जिसका काम यही है कि वो लोगों के घरों पे जाकर वो क्लेम फॉर्म्स खुद भरती है या भरवाती है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवाती है और लेकर आती है ताकि हम इस क्लेम को सेटल कर दें. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू to change the perception of the industry. And that's why I said कि हमारे लिए जो सबसे before the lockdown या during the lockdown, the key element has been our approval center, because this is an area which will actually help us change the image of the industry. कि ये इंडस्ट्री आप क्लासिक यही सिचुएशन है ना कि अगर आपने इंश्योरेंस ली भी, आप अस्पताल जा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी का फोन नहीं मिल रहा, व्हाट विल यू थिंक कि यार ये पॉलिसी जब बेचनी थी तो पैसे लेकर चले गए थे, क्लेम का वक्त आया है तो ये they are not available. That's why we made sure कि we are available whenever the customer needs our services. तो ये steps हमें सारे सब लेने पड़ेंगे. All directions we have to work it. We can't expect के हम जो सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं वो हम लेकर आ जाएंगे, because इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन वैसे भी इतनी ज्यादा नहीं है. But at least we can make changes through our teams. We can make changes in ourselves. We can make changes in our processes. And do you think, sir, there are prospects of smart partnerships, collaborations with, say, healthcare institutions, pharmaceuticals for that matter? I'm just thinking loud. मैं एक example आपको देता हूँ. While we had our second child, I was at the Aga Khan Hospital and we were, जो end में bill का होता है जो भी वो हम कर रहे थे. एंड जो उनका नीचे का काउंटर है जहाँ पे पेमेंट जमा होती है, जो भी फॉर्म्स हैं, सो वहां पे देयर वाज दिस पर्सन वाज टॉकिंग टू समबडी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम रिगार्डिंग हाउ एक्सपेंसिव हेल्थ केयर इज एंड डा 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 डा. एंड आई जस्ट बिकॉज मेरा काम हो गया था और आई वाज डन, सो मैंने उनको सलाम किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, उन्होंने थोड़ा बहुत शेयर किया. तो मैंने कहा आपके पास इंश्योरेंस नहीं है? एंड ऑफ कोर्स उसका जवाब ना में था, लेकिन ना में होने के बावजूद अकड़ पूरी थी कि ये इंश्योरेंस होने से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था. मैं आज इसी तरह ख्वार हो रहा था. बट आई जस्ट थॉट अबाउट कि क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज कैन कोलैबोरेट, और ये वो मार्केटिंग कोलैबोरेशन नहीं है कि हम जबरदस्ती इंपोज करें, बट दीज आर दोज ऑप्शंस के मिसाल के तौर पे मेरे पास एक हॉस्पिटल का बिल आता है तो उस बिल के साथ एक इम्पैक्ट हो. मैं आई एम जस्ट बीइंग स्टूपिड इन सेइंग दैट, बट मेरे पास एक बिल आया जिसमें मैंने 1 लाख रुपया भरा और उसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास एक्स इंश्योरेंस होता तो मुझे इतना भरना पड़ता. आई एम बीइंग स्टूपिड, आई नो, आई एम आस्किंग जस्ट
out of the sense question. But do you see such collaborations happening as we move forward? सुहेल, कोलैबोरेशन पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, ना सिर्फ हॉस्पिटल्स के साथ, ना सिर्फ फार्मेसीज के साथ, बट और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है. मतलब अभी आपको शायद आई डोंट नो आपको इल्म है कि नहीं, हमने वी लॉन्च्ड अ कैंसर प्रोडक्ट लास्ट ईयर रोश के साथ. वी कोलैबोरेटेड विद रॉश, और उसका पर्पस एग्जैक्टली है कि रॉश इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कैंसर मेडिसिन इन पाकिस्तान, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है इन पाकिस्तान. तो जब एक कस्टमर, अब आपने अगर एक कैंसर का प्रोडक्ट लिया है और आपका सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए, अब इसका बेनिफिट जो आपने जैसे कहा ना कि बाय डूइंग पार्टनरशिप यू एक्चुअली एनहांस वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स. तो अगर आपने 5 लाख कैंसर का प्रोडक्ट लिया हुआ है, इफ यू गो टू हॉस्पिटल और आप उसकी आपकी खुदा ना खासा कीमोथेरेपी हो रही है, तो रॉश विल टॉप इट अप विद फ्री डोजेस. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कीमो दैट इज बीइंग डन. तो अगर आप ऐसे भी हैं कि आपको 1 पे 1 फ्री मिलेगा, ऐसे भी हैं कि आपको 2 पे 1 फ्री मिलेगा. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपकी 5 लाख की जो लिमिट है वो 5 लाख नहीं है, वो 7.5 लाख है, वो 10 लाख है. तो यस, देयर आर दीज पॉसिबिलिटीज जहां पर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं टू इंक्रीज बिजनेस. यू कैन कोलैबोरेट टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस और द स्कोप ऑफ योर प्रोडक्ट्स. Right. So that's a possibility. Last question, sir. What I as an individual, or I don't know my company, but what I as an individual can do to promote the cause of insurance? सोहेल, आई थिंक लोगों को एक चीज ये बताने की जरूरत है कि इंश्योरेंस उतनी महंगी नहीं है जितनी वो समझते हैं. अभी जैसे आपने जिक्र किया ना, एक साहब अस्पताल में खड़े हुए थे, तो बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी which provides you a cover of about say 500,000 rupees per year for one individual person in your family will cost, depending on your age, will cost you probably 5,000 to 10,000 rupees per year. तो आप मुझे बताएं कि आप would you like to pay 1,000 rupees a month? आप साल में कितना 12,000 रुपए दे देंगे, 5 साल में आप 60,000 रुपए दे देंगे, 10 साल में आप 1,20,000 रुपए दे देंगे. But then you are insured for 500,000 rupees. So insurance is not very expensive. There are cheaper options as well. आपके पास लाख रुपए वाला ऑप्शन भी है, 2.5 लाख रुपए का ऑप्शन भी है, which is even cheaper. But 5 लाख का मैं नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि 5 लाख will cover majority of surgical procedures. कैंसर शायद नहीं कवर हो पाएगा, हार्ट बाईपास कवर नहीं हो पाएगा, बट 2 वेसल एंजियोप्लास्टी कवर हो जाएगी, नॉर्मल इलनेसेस कवर हो जाएंगी. एक बड़ा रीजनेबल कवर है पाकिस्तान में. Yes, healthcare has become expensive, but trust me, it is still much cheaper than many other countries. Yes. आप दूसरे मुल्कों में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट है क्या. हमारे यहाँ we are still fortunate, it is still very cheap, and the insurance is even cheaper. So before it becomes expensive, people should consider buying it now. ये सर सब तब समझ आता है जब हमारे रिश्तेदार बाहर से यहाँ पे दांतों का इलाज करवाने आते हैं ना. बिल्कुल सही कह रहे हैं. So that makes sense. Thank you so much, sir. I think there has been, मैं कोशिश करूंगा सर कि इस conversation को, although it will be available on YouTube, but we will try as a company that few of the aspects that you shared, we can convert this into an article. So those who may not be very prone to coming to YouTube and listen to conversations, they can read out a few important aspects that you shared in this conversation. Sure. Wonderful. So thank you, sir. Thank you for your time, and I hope the listeners would have gained a lot out of it. And I hope we are collectively, as mutually, we are able to, make insurance and the perception of insurance as it's not that expensive. I would not use the word cheap, but it's not that expensive, and that's very important for our families. And I think that can make all the difference. Thank you very much, first of all, for inviting me, and also thank you for your interest in Right. So this is something which is very beneficial to everyone in this country. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Very kind of you. God bless you. Allah Hafiz. Thank you, listeners.
Thank you, listeners, for joining us. You people have been very kind. Please share in your feedback, and we will try to also document this conversation so that the value of this conversation is, is reaching masses. Thank you for joining us. God bless you. Signing out.